Welcome to Pharma Digital, and today in this video we continue the topic autocoids, and here we discuss briefly about the histamine. This histamine term is derived from the Greek word histus, and histus means tissue. So simply histamine means it is a group of amine which is derived from the tissue. So histamine means tissue amine, and it is storage or it is present within the mast cell in the form of granules. When any kind of allergens attack these mast cell, rupture and release the histamine, and it produce severe allergic reactions. और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल्स बताता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो एक गेंद के साथ खेलते हैं। उस गेंद के अंदर कुछ मटेरियल्स रहता है, जैसे कि हम उस गेंद को हिलाते हैं तो कुछ साउंड क्रिएट होता है, छन छन सा कुछ साउंड क्रिएट होता है। तो जब वो बच्चे ये गेंद को बहुत ज़्यादा दिन तक खेलते हैं तो उसका गेंद का जो बाहरी लेयर है वो फट जाता है, एंड उसकी वजह से गेंद के अंदर का जो मटेरियल्स है वो बाहर निकल आता है। वैसे ही हम कंसिडर कर सकते हैं मास्ट सेल को। मास्ट सेल जो है ये कवरिंग पार्ट्स है और उसके अंदर जो है वो हिस्टामाइन एज ए ग्रान्यूल फॉर्म स्टोर होके रहता है। लेकिन जब कोई भी एलर्जन अटैक करता है तो ये जो मास्ट सेल का सराउंडिंग है वो रप्चर हो जाता है, एंड उसकी वजह से ये हिस्टामाइन जो है वो रिलीज करता है, एंड उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी एंड इन्फ्लामेशन एक्शन जो है वो दिखाता है। And it is present mainly in the mast cell, and it is also present in basophil. These are the main two primary source. And the mast cell, these histamines are stored in the form of mast cell in skin, intestinal and gastric mucosa, lungs, liver and placenta. This is the histamine store in the form of this is the histamine store inside the mast cell. Whereas other sites are also present where the histamine are not storage in the mast cell, means they are released directly into the inflammatory parts, like it is present in the form of non-mast cell like brain, epidermis, gastric mucosa. And next we come to histamine synthesis and storage and its release. So these histamine are mainly synthesized from the amino acid histidine. Means histamine is the simply the histidine is the initial constituent of histamine. Means histidine is converted into histamine, and I am already mentioned that it is stored in a mast cell in the form of granules, and it is held by positively charged acidic histamine is a positively charged molecules, and it is held by the help of negatively charged acidic proteins and heparins. Means it is these positively charged histamine are held by the negatively charged histamine and acidic proteins. Means it helps to store inside the mast cell. And when any type of immune inflammations or allergens attack this mast cell, rupture and release the histamine, and after releasing they produce its actions like allergen, and sometimes in definition it is clearly mentioned that it is a automatically relieve inflammatory product, that is the autocoids. Means when it rupture mast cell and release and cause inflammation or allergy, then it may be automatically vanished or degrade by the help of two processes, that is the oxidation and methylation, and then it is eliminated in urine. Like that, here in this picture it is clearly visible that the histamine is the conversion of histidine. Then histidine is converted into histamine by the help of L-histidine decarboxylase enzyme. Then it is, after showing its action, it is degraded and eliminated in urine by the two process, that is the oxidation and methylation. And here in this picture you clearly
and it is clearly visible that how the antigen attack to the mast cell, and these mast cell are observed, and they release the histamine and produce inflammatory reactions. Like this is the mast cell, and these purple dots are histamines, and this is the antibody. It is activated, or it is present or held by the surface receptor of the mast cell. When any type of pathogens or allergens attack, these surface receptor antibodies are activated and act as a bodyguard to that pathogen. But in this case, or sometimes these antibody are unable to act as a bodyguard to that antigens, and it bind to, and these antigen bind to these antibodies and create a antigen antibody complex, and these produce severe hypersensitivity reactions or severe allergic reaction. और इस कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझने के लिए एक हम ग्राफिक्स देखते हैं. And these histamine receptors are basically 4 types, and out of which H1 and H2 are more responsible for the creation of hypersensitivity reactions. And here, when these H1 receptor activated, these produce this type of actions, and these H1 receptors are present or located throughout the body, but especially in the heart muscles, central nervous system, smooth muscles, and vascular endothelial cell. And when these H1 receptor activated, it increase the vascular permeability, means it allow more components to cross the capillaries. Then it able to produce bronchoconstrictions, means it produce severity in or difficulties in breathing. Then it produce triple response, and then it is also responsible for stimulation of nerve ending. Like that, these H2 receptor when activated, or histamine when bind to these H2 receptor, it produce increased gastric acid secretions and vasodilation, and it is mainly located in gastric parietal cells inside the stomach, or it is also present in vascular smooth muscles, and it also located inside the central nervous system, heart, and uterus. And when these H2 receptor are activated, it produce increased gastric acid secretions, and it also produce vasodilation. Like that, when H3 receptors are activated or bound histamine to H3 receptor, they produce decreased histamine release and secretory actions in central nervous system, and it also produce vasodilation. And these H3 receptors are mainly located inside the central nervous system, and basically it is more present in thalamus and cerebral cortex, and it is also present in small amount or small extent inside the intestine, testes, and prostate. Like that, H4 receptor, this is the new invention of the histamine receptor, and it is present in gastric mucosa and various cells of immune systems and the mast cell, and it is able to produce immunomodulatory effect, means it play a main role in immunoresponse. और ये हिस्टामाइन जो है वो किस तरीके से डिफरेंट सिस्टम को इफेक्ट करता है वो देखते हैं एक एक करके. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल्स, एंड दीज able to dilate the smaller blood vessels like blood capillaries, arterioles, and it able to construct the larger arteries and veins. Means here two terms are very much important. It able to dilate the smaller blood vessels like capillaries and arterioles. Like that, it is opposite action showing to large blood vessels, means arteries and vein are constrict. And some experimentation are done by using guinea pig and rat. When these histamine are administered by subcutaneous, intravenous, and intradermal route, what happens to that, or what are the actions, or what are the pharmacological actions showing by the histamine when we administer that histamine to subcutaneous, intravenous, and intradermal route.
So on subcutaneous administration, it produce flushing, means it produce a burning sensation to the skin, and it produce heat and not much fall in BP. It is getting the result when we administered subcutaneously. Like that, on rapid IV injections, rapid fall in blood pressures, early lasting BP fall due to low doses. And here simply, low doses of histamine produce short term for blood pressure fall downs, and like that, when it high doses, it produce rapid blood pressure fall due to H1 and H2 receptor activations. And on intradermal injection, it produce triple response. Like a triple response means red spot, flare, and well, this is the triple response. And in this picture, this red dot is the first initial symptoms. Then around these red lines, some swelling and redness occurs. Then some whitish fluid or grayish fluids are released from this cut. तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि रेड स्पॉट पहले ये इनिशियली ट्रिपल रेस्पॉन्स में ये एक रेड स्पॉट होगा, क्योंकि ये रेड स्पॉट जो है कैपिलरी डायलेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज है वो फ्लेयर है, जो कि उसके ये रेड स्पॉट के और रेड स्ट्रेट लाइन के सराउंडिंग का जो टिश्यूज़ है और मसल्स है वो स्वेलिंग होने लगेगा और रेडनेस प्रोवाइड करेगा। एंड उसकी वजह से जो थर्ड स्टेप में होता है ट्रिपल रेस्पॉन्स का जो लास्ट स्टेप है, उसमें क्या होगा, ये रेडनेस और स्वेलिंग कराने के बाद उसमें से जो है पस या व्हाइटिश फ्लूइड और ग्रेइश फ्लूइड जो है वो रिलीज करेगा। मीन्स ये थर्ड स्टेप ऑफ ट्रिपल रेस्पॉन्स। एंड दिस ड्यू टू फ्लूइड आर डिपोजिटेड और फ्लूइड आर exuded from the capillaries and venules. Next we move on to how this histamine effect on heart or cardiovascular system. No direct effect showing on in situ heart, means यहाँ पे बोला गया है कि कुछ भी डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे हार्ट पे नहीं दिखाता है। मीन्स नो, देयर इज नो शोइंग ऑफ एनी वेंट्रिकुलर स्वेलिंग और आर्टेरियल स्वेलिंग, but it able to produce positive chronotropic and inotropic effect, and it is experimented on isolated heart of Guinea pig. mean it is experimented on Guinea pig. यहाँ पे देखो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड आइनोट्रोपिक बोला गया है। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है इंक्रीज हार्ट रेट, एंड लाइक दैट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब होता है इंक्रीज इट्स कंडक्शन। Like that, visceral smooth muscles, it produce bronchoconstrictions, means अगर bronchoconstriction होगा तो asthmatic condition arise हो सकता है और difficulties in breathing हो सकता है। Like that, intestinal contraction increase हो सकता है, उसकी वजह से जो है हमें डायरिया का सिम्टम दिखाई दे सकता है। Like that, human uterus is not much affected। यहाँ पे जो दूसरा टर्म है इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डायरिया, ये मैंने बोला था क्योंकि सिंपली देखो जब हम कोई भी ड्रग या खाना खाते हैं तो पहले ओइसोफागस के थ्रू वो स्टोमक को जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन को जाता है, उसके बाद रेक्टस के थ्रू और एनस के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीआईटी मोटिलिटी होने के बाद वो रैपिडली ओइसोफागस से स्टोमक को जाएगा, स्टोमक से वो इंटेस्टाइन को जाएगा और रैपिडली वो एक्सक्रीट हो जाएगा। मीन्स बहुत ज़्यादा जो फूड और ड्रग का जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं करा पाएगा, उसकी वजह से डायरिया का कंडीशन यहाँ पे अराइज हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। व्हाट आर द एक्शन शोइंग इट्स इन ग्लैंड? इट इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ H2 receptor. Like that, it able to stimulate the sensory nerve ending, that's why it produce itching and pain. And in autonomic ganglia and adrenal medulla, when it is stimulated, it able to increase the adrenal release, which able to control the blood pressures. But here, due to increase of adrenal release, it may be chances of increase of blood pressures. Like that, in central nervous system, it doesn't able to cross the central nervous system when these histamine are injected intravascularly.
And is there any clinical uses of histamine? There is no proper clinical uses of histamines. लेकिन ये बीटा हिस्टीन फॉर वर्टिगो ये यूज होता है. ये बीटा हिस्टीन जो है हिस्टामाइन का एनालॉग है. एनालॉग है मीन्स उसका सिमिलरिटी प्रोडक्ट है. ये जो है देखो हिस्टामाइन का एनालॉग है, लेकिन ये एंटी हिस्टामिनिक की तरह ही काम करता है. एंड इट इज़ यूजफुल इन वर्टिगो. वर्टिगो मीन्स जैसे कि सर चकराएगा तुम्हारा, स्पिनिंग सेंसेशन ऑफ हेड फील होगा. और ये ऑल्सो जब इनर ईयर में फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है और टिंगलिंग सेंसेशन कराता है, मीन्स पेन कराता है. और वो फ्लूइड डिपोजिशन होने की वजह से उसमें से जो है वो सिग्नल नर्वस सिस्टम को पहुंचा के वो पेन सेंसेशन कराता है. उस दौरान भी जो है ये बीटा हिस्टीन यूज होता है. यहाँ पे देखो देयर इज नो प्रॉपर क्लिनिकल यूजेस ऑफ हिस्टामाइन. ये बीटा हिस्टीन जो है वो हिस्टामाइन का एनालॉग है. एनालॉग मीन्स इट इज सिमिलर टू बीटा हिस्टीन. So this is all about the today's topic histamine, and we briefly discuss about the histamine, how it store, synthesis and release. If you have any kind of doubt, please register your comments in comment box. Have a good day. Thank you.